Yo, welcome to the most unplanned trip to Japan ever. I'm going with a friend of mine. It's 24th September. It's 12:33 right now. I'm a haircut due. I have some work to finish. So I'll work until like 4 or 5 maybe. Finish up all my packing and then the flight leaves at 11 p.m. Alright, so we are at the Pune airport. So we are flying at 11 and it's 10:33 already and अभी तक boarding gate पे कुछ भी कोई भी नहीं है. हमारा क्या हो गया ना, हम आते आते थक गए थोड़ा, तो हमको इधर बैठना था, तो इन लोगों ने बोर्डिंग ही लेट कर दी. उनको पता है शेर लोग है. So this is day one in Japan. इंडिया में आई थिंक अभी 3 बज रही होगी, 3:30. It's 7:08 here. We're on our way to the first Airbnb. We actually didn't book anything else, so like we faced some problems in immigration, but everything got sorted out, and now we're on our way. 18 hours, yeah. So we have traveled that much. Immigration took a lot of time, and then figuring out which train to take to our Airbnb, that took some time as well. In terms of work, everything is being handled. I actually don't have any overall problems when it comes to the business because everything is going swimmingly well. I remember मैंने Sakshi, like who's my operations manager, I texted her that how's the overall client work because I don't feel like there's enough chaos going on in the company, right? And she tells me that everything is going really well. So due to that, then I was like, okay, it means that we have done well with the amount of clients we have. So it's time to grow from here. We have the capability to take a lot more clients. So right now, what I've also done is I've given some sales freedom to my creative director. So in my absence, okay, sure, I have like 2-3 calls already booked for this trip. But apart from that, unless and until there's a very, very, very important call, I'm not going to take it. Aryan, my creative director, he's going to take it. So once he's able to be in the sales process a lot more, I think that's going to give me a lot more freedom to operate from pretty much wherever I want. So we have officially made it onto the streets of Tokyo. We are heading to our Airbnb finally. 9:30 बज रही है. अभी अपन निकल रहे हैं जापान की सड़कों पे. Yeah. We'll see if we can find some 7-Eleven वहाँ से कुछ लेकर. We'll see if we can find a place to have some dinner. वैसे लेट हो रहा है, अभी पता नहीं है कितनी जगहें खुली होंगी, but let's go. So we just had dinner. We went to 7-Eleven afterwards, and it's around 11 p.m. Tokyo is like, especially the location that we are in. Yeah, it's not the most, you can say, lively. We initially planned that we'll go to Shinjuku, but the thing was that we wanted to, come to our place and work for tonight at least, so that tomorrow is what, Friday? Yeah. So tomorrow we can, actually go out and explore. Basically, we got to the airport, we landed, we were in the immigration line, and wahan pe we were asked questions around our stay and everything, right? Now we had our first Airbnb booked, we had our return ticket, हमारा of course ticket था ही, and we had all of the documentation, but the issue was that we didn't have the full itinerary booked, right? So when they were asking us questions around, okay, what are you gonna do in Osaka? How do you get to Kyoto and all? We gave them the basic answers, but only because we did not have the whole itinerary book. The cars are so beautiful, bro. यहाँ पे that car, amazing. Yeah. So they asked us all that information, and then they were like, okay, you can go now. But it's like, भाई जब हमारा interrogation हुआ ना, तो हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार ये हमारे साथ क्यों हो रहा है. So everything happened, and then we cleared the customs line, and then we took the trains and all, got to our apartment. So basically that all happened, and then अभी 7-Eleven से we'll pick up some stuff, go back to our apartment, walk a bit, and we'll prepare our actual itinerary. तो हमें ना किसी ने पूरा ही बोला नहीं था कि तुम्हें पूरी अपनी itinerary book चाहिए जापान के लिए. We thought that कि उतना strict यहाँ पे नहीं होता है. But anyways, we'll take care of that, and yeah. And we are heading for the Senchuji temple, and आज का plan तो we go to the Senchuji temple,
एंड देन उसके साथ में क्या क्या वहाँ से we'll go around eat, we'll go to the Tokyo Skytree and Akihabara, एंड में हम लोग फिर शिंजुकू जाएंगे and we'll end it there. आज के important tasks में we have to book our next Airbnb, पहली चीज़. उसके साथ में like we have the Airbnb and then we have to book the Mount Fuji experience and everything else, ताकि फिर हम लोग एकदम टाइम पे निकल पाए. क्योंकि माउंट फूजी के लिए आई थिंक सुबह 8 बजे उठना पड़ता है. एंड हमने लाइक GVD वगैरह के साथ में बैठ के बहुत सारी चीज़ें करी थी ताकि हमें समझ में आए कि what are the experiences that we should bundle together. So we have done that. Let's see कैसा रहता है आज का. So we are at this market near Sensoji Temple. There's endless crowd यहाँ पे, है ना? And I think since this is a Friday as well, but so this is the temple. Now the thing is that कि हम दोनों अपना ऑनलाइन बिजनेस भी कैसे चला रहे भाई अपन. ये पूरे बस ड्राइव में अपने कोच को मैसेजेस कर रहा था. मैं मेरी टीम से बातें कर रहा था बिकॉज देयर वर लाइक अ कपल लीड्स जिनका काम करना है. नाउ मैंने इंडिया टाइम में असल में 5:30 पे शेड्यूल किया था कॉल अपना. आज अब वो उसका कॉल 6 बजे शिफ्ट हो गया भाई. तो वी हैव टू फाइंड अ कैफ़े बाय देन. अभी 3 बज चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे. सो वी आर द टेम्पल, थोड़ा यहाँ पे पास में घूमेंगे. वी विल फाइंड सम प्लेसेस टू ईट, वील बाय सम सोवेनियर्स एंड ऑल, एंड आफ्टर दैट वी विल go and get to work for a bit because then रात में तो हम काम नहीं करने वाले बिल्कुल भी. So we are in this really nice coffee spot in Tokyo Skytree Tower. It's called Hand Drip Coffee. It's 5:30 currently. We went to the Sensoji Temple and then took the train from there, and now at 6 p.m. we have our slot to go in the top floors of the Tokyo Skytree Tower. We took the passes for both the floors and then we still have like 30 minutes left. So I was supposed to have a call at 6 p.m. as well. The same dude that I was mentioning at the Sensoji Temple. I actually cannot take the call, so I had to postpone it. And then in the meantime I've just been communicating with the team to basically make sure that everything is moving forward. And business is so polarizing when you are not involved in it in the day-to-day basis. For example, because we have this one very important client who is on us with a long-term agreement, but there were some issues with her not posting the content for some reason. So she requested a meeting from the team, and now the team basically will be able to take the meeting with her. And on the other side, I got a DM from a new client of ours. This is only the first month, and he was very excited after seeing the first set of videos that we made for him, and then he requested me that, hey Saksham, can you give me a new quote on like an additional set of videos for his other account. And then in parallel we are also doing some stuff to attract more leads and more customers for the agency. All of this is happening, and now I'm traveling here and I haven't worked at all since the morning, and that's basically like the freedom that comes with being an online business owner. So guess the grind was worth it. इस जगह पे थे हम, यहाँ पे. पुणे में इतना ऊंचा घर बना सकते हैं क्या भाई? बस इतनी हाइट चाहिए घर में है. ये तो प्लेन से दिखता है, पता है. नो किडिंग, प्लेन में ही दिखता है ऐसा. So we're in the streets again. Are we for the streets? In Japan. Yes. So since we woke up, we haven't stopped walking essentially. We are not tired yet. Yeah, we are not. So Our next plan is to go and have 2 a.m. ramen. Yeah, and make that Instagram trend. Basically what happened throughout the day is हमारा पावर बैंक का बैटरी बिल्कुल डेड हो गया. मेरे पावर बैंक में थोड़ी सी बैटरी बची थी, इसके वाले में तो बिल्कुल डेड हो गई थी. एंड
हमारा एक ही पैनिक हो रहा था बस चीज़ को लेकर, विच वॉज फाइंडिंग अ पावर अडाप्टर. यूजुअली फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर इन बाली, तो उधर तो लाइक उधर अडाप्टर्स हमको लाइक उनके मार्ट से मिल जा रहे थे, के सर्कल एम मार्ट वगैरह में. यहाँ पे व्हेन वी वेंट टू एनी मार्ट, कहीं पे भी हमें अडाप्टर्स नहीं मिल रहे थे. सो वी हैड टू फाइंड दिस 4-story electronics building in Akhiawara. So we picked up the adapters, then we went to Sugamo station. वहाँ से we got on the train and we are almost back to our Airbnb. We are walking. अभी कितना 10 मिनट का वॉक है ना अभी तो. We both have ankle injuries. Our left ankle is basically fucked. तेरा भी लेफ्ट है ना. Yeah. And I have a left knee tibia fracture like I had, but nothing can stop us. आई थिंक अपना एक अच्छा हैबिट आज का रहा है जो अपन ने एटलीस्ट कल से कंटिन्यू किया है, विच वॉज दैट वी टुक अ शिट टन ऑफ पिक्चर्स एंड हम इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी डालने लग गए उसको. फॉर एग्जाम्पल स्पेशली फॉर मी, आई हैव द सिवियर लैक ऑफ प्रेजेंस ऑन कैमरा व्हेन इट कम्स टू फोटोज़. वीडियोज़ में तो मैं थोड़ा स्पॉन्टेनियस हो जाता हूँ, बट पिक्चर्स में बिल्कुल नहीं होता हूँ. आई एम जस्ट डेवलपिंग दिस हैबिट. इसको भी लाइक फ़ोटो लेने का काफ़ी शौक है, तो आई थिंक वो थोड़ी सी हैबिट बन रही है वापस से. एंड या प्रीटी मच इट. Boys are in Shibuya. We go to the Shibuya crossing, probably Shibuya Sky. If possible, we will probably find some cafe. Maybe walk a bit from there. And then sort out a plan for the rest of the day. क्या रे लाला? आ गया मैं. ऐसा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते. लाला ऐसा करो रे. We moved to Shinjuku, like near Shinjuku station, for the next few days with our Airbnb, and currently we are just above Shibuya crossing. There's a beautiful view from here. You guys must have seen the B-roll so far, and we just clocked in a good hour and a half proper work session here. This place is called Share Lounge. I mean, you have to pay for sitting at any of these tables. I was supposed to sit on that table, but there's like a very small square table only, where only one laptop could be placed. So I moved here. I'm charging my DJI, and then I charge my phone and all while working. And right now we'll just go around Shinjuku, explore a bit, maybe go to Uniqlo to shop for a bit. We'll see what we do around Shibuya today. Tomorrow we have like some sort of an itinerary planned already, and then pretty much all of the work is done. We actually have really good sales calls in the pipeline that my creative director is going to take, but there's this one sales call that I asked him today to include me as well in. And then there was this one person that I've been talking to for like 3.5 months, which was supposed to be one of the headliner case studies of the agency if I closed him, but he kept on delaying the call 1 month after the other since he was working on something himself. And then today I got the message from him that he is ready to chat next week, and he has been seeing some of the work that we have been doing, because we of course stay in touch with him, and he liked what we have been doing recently, so we're going to explore that opportunity. I think I love Tokyo. When I got here, the place that we were staying at, it was a bit calm, but as we move towards the busier parts of Tokyo, I can see why people love coming to this place again and again. And then I love the calm side of Tokyo as well. And I mean, there's a lot of experience. We have like 10-11 days left on this trip, and I'm super excited. So I'm just gonna probably have some food here, because there's like free food available. We're just gonna eat something and then go downstairs, or probably go upstairs, because there's this Pokemon card lounge as well. We'll go explore. I mean, we've just been walking endlessly over the last few days, so let's get it.
हाँ तो अपन कंटिन्यू कर रहे थे। कल मैं तो लैपटॉप पेट पे पड़े रह गया और मैं सो गया। इसको होश नहीं था, मेरी नींद खुली, फिर ये मेरे को देख के ये उठा, बट ही मेड इट इन टाइम। इसकी क्या रेटिंग है? 9 भाई चक्कर आ रहे हैं छोटी सी ब्रो। वहाँ कोई जा नहीं सकता इसलिए वो रुक रही है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे द्वारा मारी जाती है, उनमें से एक चाय है। Almost 6 p.m. We're in beautiful Akihabara and we booked the Tokyo Drift tour and we are here. We've got the car fleet in front of us. You can see we have the Mitsubishi there. So we decided that we'll both go in separate cars so we can switch spots later. Flashbacks. हम टोक्यो ड्रिफ्ट वाला पूरा गेट योर गाइड से टूर करके आए थे, ठीक है। मस्त कार चला रहे थे। इसकी वाली थोड़ी कार थोड़ी सी मिड थी, मेरी वाली कार बहुत प्यारी चलाई भाई उस बंदे ने। मेरी वाली ली थी उसने 160-170 पे। सेम। तो उसके बाद में ही वॉज सपोज टू ड्रॉप अस ऑफ, बट देन वी वर लाइक कि भाई नहीं, हमें ना यहीं रुकना है। शेर का रास्ता। हाँ, शेर का रास्ता। शेर कभी भी सीखता नहीं है। तो वी गॉट ऑफ जस्ट आफ्टर शिंजुकू, ठीक है। And then we were like, we can we can get the second last metro. Yeah. ठीक है। We got on that. Like first one we had the correct one. Second one we went the wrong way. We had to go from 7 to 11. हम 7 से 6 पे आ गए। नहीं, 9 से 11 जाना था। 9 से 7 आ गए। हम 9 से 7 आ गए, ठीक है। शिंजुकू से निशी शिंजुकू आ गए। तो हम वहाँ पे आए, अंदर हमें रियलाइज हुआ हम गलत आ गए। मैंने इसको बोला भाई अपने को किस पे जाना था? इसने बोला 11। मैंने कहा भाई अपन 6 पे आ गए, ठीक है। तो हम फिर बाहर हम मेट्रो में गए अंदर, एंड हमने देखा कि जो सही साइड में जा रही थी मेट्रो वो बंद थी। देन हम बाहर आए एंड देन ही सॉ कि ऊबर पे साइकिल्स अवेलेबल है, बट देन जब भी अपना कार्ड डिटेल्स डाल रहा, कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ। देन वी वर लाइक कि अब हमें वो करना पड़ेगा जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम जापान में करेंगे, शेर का रास्ता। एंड दैट्स अ कैब राइड। बताओ देख, शेर ने दिक्कत क्या करी है? शेर है ना कभी कभी ज़्यादा शिकार कर लेता है और खा नहीं पाता और उसके अंदर ज़्यादा पड़ा होता है। हमारे साथ में यही हुआ। हमने है ना आई थिंक लास्ट बाली से आने के बाद में है ना हमने थोड़ा सा अच्छा कर लिया काम में हमारे, ठीक है। शेर एक्स्ट्रा खर्चा करेगा, बट देन आज का मोटिवेशन क्या है? हम दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। हम दोनों ने ना एक पर्सनल गोल सेट किया है फॉर नेक्स्ट ईयर। मेरा अर्ली नेक्स्ट ईयर है, इसका आई थिंक थोड़ा सा आगे गणेश चतुर्थी के टाइम एक पे। साल। हाँ, इसका ऑलमोस्ट 11 महीने करीब बात का है। तो हमने वो गोल सेट किया है एंड देन ऊपर वाले की देन से जय श्री राम। जय सिया राम। क्या रे, हम रोपवे के लिए एक्साइटेड थे, देन इस वेदर की वजह से जाने नहीं दे रहे। हम तो लटकने वाले थे रोपवे में। बड़ा तो हमें जो लगा था कि हमारा रोपवे में सोने वाला है, हमको कोई रोक सकता है क्या?
Yeah. Share. For passengers continuing on to Tokenda Station, this railway is bound for Tokenda. रितेश ये क्या है? पूछिए भाई। वही है ना? हाँ हाँ पूछिए। तो अपन वहीं पे थे ना ऊपर अभी थोड़ी देर पहले। वही थे, उधर थे। So we could not vlog the remaining day yesterday. कल अपन कहाँ थे? यूको में कैमरा क्लोज करके था ऐसे जगह योदोबाशी। हाँ योदोबाशी कैमरा इसने ये उठाई देखा इसने ये ली आई गॉट अ पिसाज ऑटोमेटिक कॉपर डायल या फिर ब्रॉन्ज जो भी है वो आई गॉट थोड़ा कज़न एंड देन उसके बाद में वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड आवर एयरबीएनबी एंड नाउ वी आर एट द Tokyo station and we are just gonna board the Shinkansen to Kyoto. Costs more than what we pay for flights in India because we got the green car 12,000 नहीं 11,000 something per person and ये Kyoto पहुँच गया I think around 2 hours and 15 minutes में। आज का प्लान लाइक हमारा क्योटो में ज़्यादा कुछ तो नहीं है वी डोंट इवन नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू एट क्योटो तो हमें बैठ के आइटनरी बनानी पड़ेगी पूरी आई हैव अ बंच ऑफ वर्क क्योंकि आज की तारीख है 30th है ना आई हैव टू सॉर्ट आउट अ लॉट ऑफ टीम इनवॉइसेस अभी क्योंकि टीम के बिल्स बनने लग गए हैं हम बॉस देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू हैंडल इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस क्योंकि हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए और आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि जो कल सेल्स कॉल ली मैंने रात को 1:30 बजे I'm setting the asset that we told them because that could be a big 6K 7K retainer moving forward so काफ़ी सारा काम है तेरा 4D है मेरा 3D है